Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the life cycle of bacteriophages. So let's move to the whiteboard. So dear students, life cycle of bacteriophage, very important long question as far as the board exams are concerned. Clear? तो ये उसके हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है. इसमें से शॉर्ट भी बनेंगे, MCQs भी बनेंगे, वो मैं आपके साथ साथ शेयर करता चलूँगा. तो दो तरह के लाइफ साइकिल्स होते हैं बैक्टीरियोफेजेस के. सो व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस डियर स्टूडेंट्स? होपफुली अब तक सबको याद हो चुका होगा, फिंगर टिप्स पे होगा. द बैक्टीरियोफेजेस, the viruses which infect the bacteria or which eat the bacteria, bacteria eaters, they are called as the bacteriophage. Bacterio means bacteria and phage means eater. Phago से याद आया आपको? Phagocytosis, the cellular eating. तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाए वो कहलाता है बैक्टीरियोफेज. तो इनके लाइफ साइकिल की बात हो रही है. हमने इससे पहले बात की थी कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में दैट द वायरसेस दे आर इंट्रासेल्युलर obligate parasites. Clear? They are obligate intracellular parasites. Obligate intracellular parasites क्यों कहते हैं? Because they can only reproduce and multiply inside a living host. क्लियर? तो उनको हर हाल में रिप्रोड्यूस करने के लिए एक लिविंग होस्ट चाहिए, उसके बगैर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो दो तरह के साइकिल्स है, लाइफ साइकिल्स इनके, जिससे बैक्टीरियोफेज गुजरता है. वन इज द लिटिक साइकिल and the second one is lysogenic cycle. क्लियर? और इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे बुक के अंदर भी शामिल है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. तो डियर स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिएगा. तो इस डायग्राम की मदद से इसका लाइफ साइकिल को हम समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस. So this is actually a bacterium. और इसमें डबल बाउंड्री बनाई है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, जो कि इसके अंदर मौजूद होती है. ठीक है. सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. और इससे प्रीवियसली फ्रॉम दिस पॉइंट so over here there was attached the bacteriophage. Clear? And it has penetrated its core. इसने अपना कोर जो है वो इस पे पेनिट्रेट कर दिया हुआ है यहाँ से, और उसके ज़रिए it is unloading the DNA. Another which is showing that it has got attachment. Clear? So this is the first step. This is the first step. And this is bacterial chromosome. The first step is
फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेप्स आर देयर. तो पहले दो स्टेप्स कौन से डियर स्टूडेंट्स? द फर्स्ट स्टेप इज एड्सॉर्प्शन. और एड्सॉर्प्शन का क्या मतलब है? कि वहां पर अटैच होना. एंड द सेकेंड स्टेप इज पेनिट्रेशन, which means the injection of its DNA, the phage DNA inside the bacterial cell. So over here, the bacteriophage attaches itself to bacterial cell wall and injects its DNA inside the bacterial, inside the bacterium. Clear? So that is the first and the second steps. Clear? And after that, the bacterial DNA chromosome, and it is incorporated with the phage DNA. So this is a phage DNA and this is bacterial chromosome. So here the phage, it is a short form for bacteriophage, okay? The phage incorporates its DNA into bacterial chromosome. ठीक है, जब इसके अंदर इंसर्ट कर देगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा. नाउ इट इज कॉल्ड प्रोफेज. नाउ इट हैज बिकम प्रोफेज. अब यहां से डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ये इसके साथ एंटर होगा, नाउ इट इज गोइंग टू डायरेक्ट द मशीनरी और द सेल्स मेटाबॉलिज्म टू मेक द पार्ट्स. ठीक है, जो फेज डीएनए है, जो कि स्टेम्प्रोफेज के तौर पर एक्ट कर रहा है, वो डायरेक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है, तो ये बैक्टीरियल बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूटिलाइज करेगा और उससे क्या बनवाएगा? अपने पार्ट्स, द प्रोटीन्स एंड द पीसेस ऑफ डीएनए. And that is a third step. So first two steps, now the third step, that is synthesis. It is known as synthesis. Synthesis का मतलब होता है बनवाना, ठीक है, to form. So that is the third step. Synthesis. So here, the phage DNA controls the cell's metabolism इसको टेक ओवर करेगा एंड डायरेक्ट्स का मतलब कि उसको हिदायत देना, द सेल्स मेटाबॉलिज्म टू फॉर्म
the pieces of DNA and proteins. तो यहाँ पर जो DNA के पीसेस वो बनना शुरू हो जाएंगे इसके अंदर, इसको डायरेक्ट करेगा लाइक दिस, और साथ में कुछ जो प्रोटीन्स हैं उसकी वो भी बनना शुरू हो जाएंगी, उनके पीसेस बनना शुरू हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट स्टेप, so hopefully you will be drawing along with me, तो आपको easy हो जाएगा इसको समझना. So now the empty heads are formed along with the viral DNA. So here the empty heads and the phage DNA has been formed. Clear? And after that, there comes the fourth stage or fourth step. In this step, the empty heads become packed with the DNA, and this step is known as maturation. This is the fourth step, which is called as maturation. And what happens during maturation, dear students? The empty heads are packed with phage DNA. जब वो पैक हो जाएंगे, इस स्टेप को हम कहेंगे maturation. This is known as maturation. So what happens? Now you can see the empty heads which have been packed with the DNA, the phage DNA. This step is known as the maturation. Clear? Now in the next step, what happens? To these heads, अब head formation मुकम्मल हो चुकी है. Now what will happen? There will be the formation of addition of collar, sheath, end plate, and the tail fibers. In the last, the tail fibers.
तो इसके साथ यहाँ पर पैकिंग हो जाएगी। अब ऐड होंगे कॉलर, शीथ, बेस प्लेट and the fibers. They have been now added. Clear? And after that, within 25 minutes, 25 मिनट के अंदर ये जो डीएनए अंदर इंसर्ट किया था इस फेज ने 200 कॉपीज वो बनवा लेगा विदिन 25 मिनट्स। आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। सो जब वो ऐसा करेगा, द सेल, बैक्टीरियल सेल, it will burst. It will burst. So releasing the phages. And one of them is moving to the infect another bacterial cell. Clear? So this step is known as release. This is the fifth step. This is called as release. In which, अच्छा dear students, इसको भी ऐड करता चलो पहले। Collar, sheath, and base plates have been added or have been attached. किसके साथ अटैच होंगे डियर स्टूडेंट्स? विद हेड, उसके हेड के साथ। एंड टेल फाइबर्स आर एडेड और अटैच्ड इन द लास्ट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इसके साथ जो मैच्योरेशन के बाद जब हेड पैक हो चुके तो उसके बाद पहले कॉलर ऐड किया जाएगा, फिर उसके बाद शीथ ऐड की जाएगी, अटैच की जाएगी, फिर उसके बाद बेस प्लेट ऐड किया जाएगा। किसके साथ? हेड के साथ। और सबसे एंड में इन द लास्ट, ये एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट चीज है कि द टेल फाइबर्स, नॉट ओनली फाइबर्स आर अटैच्ड और एडेड इन द लास्ट। सबसे आखिर में टेल फाइबर्स ऐड होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रिलीज है। द बैक्टीरियल सेल इज लाइज्ड। लाइज्ड का मतलब कि वो फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। लाइज्ड और रप्चर्ड, रिलीजिंग the new bacteriophages. Clear? और इन्हीं में से जो बैक्टीरियोफेज जैसे ये रिलीज होते हैं, they are ready to attack another bacterial cell. Clear? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अटैक किया। सो दिस साइकिल, जिसमें कि आपने देखा कि उन्होंने बर्स्ट कर दिया सेल को, बैक्टीरियल सेल को रप्चर कर दिया। दिस इज नोन एज द लिटिक साइकिल। दिस इज नोन एज द लिटिक साइकिल। लिटिक इज फ्रॉम लाइसिस, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने रप्चर कर दिया उसको, बैक्टीरियल सेल को, होस्ट सेल को, उसको रप्चर कर दिया, उनकी मेम्ब्रेन को, सेल वॉल और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों को रप्चर करके, एंड दे एस्केप्ड एंड दे
ready to attack another bacterial cell. Clear? यहाँ पर प्रोफेज की डेफिनेशन ज़रूर याद रखनी है. When the phage DNA gets incorporated or becomes attached to the bacterial chromosome. So at this condition, this phage is known as the prophage. Clear? So dear students, hopefully lytic cycle आपको clarify हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.